डॉक्टर महवेश, आपको आवाज आ रही है? Mahvesh Raza is currently working as Dean Faculty of Education at Forman Christian College University, Lahore. She completed her PhD from Austria in mobile learning. She is a competent trainer, a wonderful researcher, and an excellent teacher. Dr. Raza has a number of research publications on her credit. She published in various reputable impact factor journals, and she also conducted a number of research projects. Dr. Mahvesh Raza had joined us, I believe. Dr. Mahvesh, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैडम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज. We cannot hear you. Your slides are visible, but your voice is not getting through to us. Ji, Dr. Mahvesh, we can hear you clearly now, and your slides are also visible, and I have already given your introduction to the participants. Okay. Your slides are visible, and now I take this opportunity to request you to please start. Thank you so much, sir. Sir, the chat is disabled for me. I cannot send a message. I want to share a few links with the participants. Can I share the links with you and you can further share it on? Sure. Kindly send it to me. I will share it. Kindly WhatsApp it to me. I will share it with the participants. So thank you so much for introducing me, and the topic of today's conversation is management of teaching and learning resources. During this training session, we will be talking about a range of different teaching and learning resources. We will also be looking at the definition of teaching and learning resources, and that's where I wanted to start my session from. Before I take you through the agenda, I want to just remind you of the teaching and learning resources and what do we mean by it. These are all the instruments which are used for presentation and transmission of prescribed to support outcomes. Now, which means that I know you all understand what are teaching and any tangible retail lecture room, and you use it for achieving the student learning objectives, for fulfilling your lesson objectives. This means that anything that supports the venture of teaching, the intervention that you have planned for your students, falls under the category of teaching and learning resources. Very quickly, I have another question for you, which is going to come just in a while after I share the agenda with you. So as I explained it to you that today we are going to talk about the range of teaching and learning resources. There is going to be a virtual board activity in which I will ask you a question and you all will submit an answer. You will also be looking at different strategies for identifying suitable resources, because this is also a very important aspect in management of teaching and learning resources. The first question is, are the teaching and learning resources relevant to what you need them for? क्या ये suitable resources हैं जिनके साथ आप पढ़ाना चाह रहे हैं? उनका क्या impact होगा students की learning पे? ये सब बहुत crucial सवाल हैं जो कि हमने अपने आप से पूछने होते हैं, और इसकी कुछ strategies हैं जो कि मैं आपके साथ share करूँगी. We will also be looking at strategies for managing resources. किस
तरह से आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज को मैनेज करें। और मैनेजमेंट का क्या मतलब है, हम क्या एक्सपेक्टेशन है एक टीचर से मैनेजमेंट, जब हम कहते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज को मैनेज करें तो हमारा मतलब क्या है इस बात का, और कैसे आप एज फैकल्टी मेंबर्स अपने टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास एक सेगमेंट होगा जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज के लिए कोई राइट एंड रॉन्ग फॉर्मूला नहीं है। सो इट्स बेटर इफ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से की गुड प्रैक्टिसेस को कंसिडर करें और उन गुड प्रैक्टिसेस के ऊपर अपनी लर्निंग को इस्टेब्लिश करें। सो हियर आई कम with the first question. I'd have to share the link with you. Just give me a minute, please. आसिफ साहब, आपको मैंने एक लिंक शेयर किया आपके व्हाट्सएप पे, आपको डिलीवर हो जाएगा भी। वो ऑनलाइन अपने आंसर्स को पोस्ट करें ताकि सब लोग आपके आंसर्स को देख सकें, एंड देन वी कैन हैव अ फर्दर डिस्कशन ऑन देम। आई होप कि आप अपने जवाब स्क्रीन पे देख सकते हो। लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन। अभी तक हमारे पास कोई जवाब अपीयर नहीं हो रहा। Okay, excellent. So I have a lot of responses here. Good. Let's take a look at them. I hope आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। Zoom stands out. 7 people have commented that they have used Zoom during remote teaching. Zoom, Google Meet, WhatsApp, mobile, slide sharing through WhatsApp groups. You have also prepared video lectures and uploaded them on YouTube. You have also used some textbooks, notes, models, and multimedia. Flipped learning is more effective. Yes, sir, flipped learning is definitely effective, but the question is learning. So, excellent. So these are all of some resources that used for teaching and learning during remote teaching. All of these resources are a mean to communicate with your students, and these resources have been available. Some of them are just free of cost. You don't have to pay anything. Some people have also used some paid resources. It really depends on institution to institution. आपके institution में क्या culture है, उन्होंने आपको क्या facility दी हुई है, आपके पास कोई learning management system की provision है या नहीं है. So naturally आपकी choices depend करती हैं आपके पे, और determine करता है आपकी
इंस्टीट्यूशन को के कॉन्टेक्स्ट से आपका कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन होता है। अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में है तो नेचुरली आपकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी, और फिर आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ लुकिंग एट दिस स्लाइड एट प्रेजेंट, जो आपने अपने रिस्पॉन्सेज दिए, इसके अंदर से अगर मुझे पिक एंड चूज करना हो रिसोर्सेज को और मैं कैटेगराइज करना चाहूँ, तो मैंने एक रिसोर्सेज की कैटेगरी आपके लिए प्रिपेयर की हुई है ऑलरेडी, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज. So I'm going to go back to my presentation and let's talk about different types of teaching and learning resources. Essentially, अगर आप अपने responses को फिर एक दफ़ा अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करें और देखें, तो आप भी एग्री करेंगे कि there are some resources जो विजुअल पैकेजेस यूज हो सकते हैं, मे बी आप बुक्स यूज कर रहे हैं, ये स्टैटिक विजुअल होते हैं जो कि चेंज नहीं हो रहे होते, मगर आप अपनी आंखों से इनको देखते हैं और इंफॉर्मेशन सिर्फ विजुअल फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। फिर कुछ के इंटरैक्टिव विजुअल होते हैं, फॉर एग्जांपल there are videos, so you're looking at them and you're making meaning out while the image rapidly changes on the screen. Some people have written in the meeting chat that my sound is not clear. Is that so? Is there a lot of distortion in my sound? Okay, give me 2 minutes. Let me change the network through which I'm connected, and let's try another network. Because if you can't hear me, then it's pointless to talk. So just give me 2 minutes, please. Voice. इसके अलावा इंटरैक्टिव रिसोर्सेज होते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके साथ स्टूडेंट्स या टीचर्स इंटरैक्ट करते हैं, और ये रिसोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एवर प्लेड on Kahoot, it's an interactive resource. आप एक पहले सवाल से दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, एंड देन सो एंड सो फोर्थ, जितने सवाल टीचर ने प्लान किए होते हैं वो तमाम के तमाम सवाल स्टूडेंट्स के सामने अपीयर होते हैं। स्टूडेंट्स उसके अंदर एक कमांड देते हैं, और जब वो कमांड दे देते हैं तो फिर ओनली देन द एप्लीकेशन reveals the next question. So आहिस्ता आहिस्ता स्टेज बाय स्टेज ऐसे रिसोर्सेज अनफोल्ड होते हैं, और कोर्स कंटेंट या लर्निंग कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता विद एवरी स्टेज ऑफ योर इंटरेक्शन एक नेक्स्ट फेज है जो कि रिवील होता है आपके कोर्स का या आपके लेक्चर का। इस किस्म के जो रिसोर्सेज होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन लर्निंग एनालिटिक्स। इनके पीछे बैक एंड पे लॉगरिथम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। कोई इफ एंड देन सिचुएशन होती है, या सही सवाल के जवाब के बाद आप जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपकी आवाज कट रही है। they are my work, or should I continue? मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, काइंडली चेक कीजिएगा, इंटरनेट का इशू आपकी तरफ में।
सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई डोंट नो कितनी बात आपको मेरी समझ आई है, बट मैं आपको टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज की डिफरेंट टाइप्स से इंट्रोड्यूस करा रही थी। ये सब वो टाइप्स हैं जो कि आपने अपने रिस्पॉन्सेज में आंसर गार्डन पे जो आपने रिस्पॉन्सेज पोस्ट किए हैं, ये सब उन्हीं से डिराइव की गई हैं। उन्हीं रिसोर्सेज को अगर हम कैटेगराइज करें तो देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज जो कि सिर्फ पिक्चर ओरिएंटेड रिसोर्सेज होते हैं। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज विजुअल। विजुअल रिसोर्सेज की दो कैटेगरीज होती हैं, एक स्टैटिक विजुअल रिसोर्सेज होते हैं और एक इंटरैक्टिव विजुअल रिसोर्सेज होते हैं। जो स्टैटिक विजुअल रिसोर्सेज होते हैं उसमें इमेज स्टेशनरी होता है, मूव नहीं हो रहा होता, जबकि जो इंटरैक्टिव विजुअल रिसोर्सेज होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन। इमेज के अंदर कुछ मूवमेंट, कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह के रिसोर्सेज को इंटरैक्टिव विजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। देन यू हैव ओनली वॉइस बेस्ड रिसोर्सेज जिनको ओरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये पॉडकास्ट्स हो सकती हैं, वॉइस क्लिप्स हो सकते हैं, सिंपल वॉइस मैसेजेस हैं जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को भेजते रहे हैं प्रॉबली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड व्हाट्सएप के थ्रू। तीसरी कैटेगरी जिससे हम सब लोग फेमिलियर हैं वो ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे ऑडियो इज कंबाइंड विद द वीडियो एंड it is created in the form of a video with the voice over. So एक normal video जो कि आप let's say YouTube से कोई random लेक्चर है जो कि किसी और टीचर ने कहीं और पढ़ाया है एंड यू आर यूजिंग दैट और यू आर टेकिंग दैट फॉर योर लेक्चर, वो ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज के अंदर फॉल करेगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर वॉइस ओवर किया है तो वो भी ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज में ही फॉल करेगा। फोर्थ कैटेगरी इज प्योरली डिजिटाइज्ड रिसोर्सेज जो कि इंटरैक्टिव होते हैं, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिफाइड रिसोर्सेज होते हैं। ये इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल काहूट है। अगर किसी ने काहूट यूज़ किया है तो वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि स्टेज बाय स्टेज आपके जो सवाल हैं जो आपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए हैं वो वन आफ्टर अनदर रिवील किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए एंड इट्स मोर लाइक अ गेम। सो these resources are gamified version of resources. They are technology embedded, they are interactive and they are based on back end logarithms जिनके अंदर if and then situation plays a great deal of role. Then you have performance based resources जो कि product driven होते हैं। ये तमाम वो resources होते हैं जिसके अंदर आप product को anticipate करते हैं। So maybe quizzes and other resources that you upload and you use through different learning management systems. For instance, at Moodle, you have the opportunity to create your own books. Then you have online presentations such as Prezi. It's an online presentation tool. Poster making applications where students interact with the technology only to produce an outcome. So it is not process oriented, rather it is outcome oriented. Or lastly, there is a new category of resources which I'm going to introduce this with a change perspective. I know that social emotional learning is embedded in your ongoing instruction. However, there are, especially in the times of COVID, there is a special focus on social emotional learning tools. Zyada mindfully, teachers have to prepare and have to inculcate, harness the social emotional learning among students. They have to be cognizant that they must encourage collaboration. They must engage students in activities that promote a sense of self-actualization. They must prepare students to to regulate their learning attitudes. इस किस्म के जो resources हैं और ये resources बाकी तमाम 5 resources की जो category है उससे मिलके बनते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके ऊपर कि ये सिर्फ ऑडियो होंगे या सिर्फ विजुअल होंगे।
बट इनका जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की सोशल इमोशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन करना है। ये वो 6 कैटेगरीज हैं रिसोर्सेज की जिनके थ्रू आप स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। आपने जो डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट नाम बताए थे हमें अपने प्रेफर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के, वो तमाम के तमाम इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल किए जा सकते हैं इजीली। सो overall, if you take an overview of teaching and learning resources, dig down of categories of teaching and learning resources. Now the big question is, how should you identify a suitable resource? कैसे आप एक suitable resource को identify करें? इतने सारे resources हैं, 6 different categories हैं resources की, आप कैसे identify करेंगे कि मैंने कौन सा resource इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो आपने अपने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को देखना है। आपके पास जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो क्या हैं? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं स्टूडेंट से? आपने किस तरह से स्टूडेंट्स की असेसमेंट प्लान की हुई है? कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आपके ख्याल में स्टूडेंट्स को मास्टर करनी हैं इन ऑर्डर टू अचीव दीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? कौन सी कॉम्पिटेंसीज ऐसी हैं जो कि आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं? उसके लिए किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप स्टूडेंट्स को देंगे? ये सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट स्टडी करें। उनकी क्या उम्र है, क्या उनके लिए ये पर्टिकुलर कोई भी रिसोर्स जो आपके जहन में आ रही है, क्या ये एज अप्रोप्रिएट है? इज इट रेलेवेंट टू व्हाट यू वांट टू डू? इज इट गोइंग टू स्ट्रेंथन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट यू प्लान टू टू द स्टूडेंट? क्या सबके पास एक्सेस है उस पर्टिकुलर रिसोर्स की, या आप किसी को डिप्राइव कर रहे हैं ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी? इक्विटी का क्या स्टेटस है? क्या स्टूडेंट्स को किसी किस्म की मॉनेटरी मॉनेटरी फैक्टर्स तो नहीं है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिप्राइव हो जाएंगे इन टेकिंग पार्ट इन दिस एक्टिविटी? क्या आपके कॉलेज के पास या आपकी यूनिवर्सिटी के पास, आपके इंस्टीट्यूशन के पास वो रिसोर्सेज हैं? अगर किसी स्टूडेंट के पास ऑन देयर ओन कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है, तो क्या आप उसको वो रिसोर्स के साथ फैसिलिटेट कर सकते हैं? You must analyze the context of your students, you must analyze the context of your institution. Also, I think it's a very important aspect which is not written here is the ability level of the students. क्या आपके स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर रिसोर्स को इस्तेमाल करके वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं जो आपने प्लान किए हुए हैं? Sometimes we think that our students are able to perform a certain task and they are able to achieve a certain outcome. But the students face certain issues in navigating between different resources or using different digitized resources to achieve learning outcomes. Then you have a timeline. आपने इस रिसोर्स को, जो भी रिसोर्स आपने प्लान किया है, इस पर्टिकुलर रिसोर्स को इस्तेमाल करने से पहले क्या करवाना है और इसके बाद क्या करवाना है, और ये रिसोर्स कैसे स्ट्रेंथन करेगा आपके लर्निंग आउटकम्स को और आपकी टीचिंग को? क्या ये रिसोर्स का इस्तेमाल आपकी टीचिंग से डिविएट कर देगा स्टूडेंट्स को, उनके जहन को, या जो कॉन्सेप्ट्स आप उनको पढ़ा रहे थे उन कॉन्सेप्ट से डिविएट कर देगा, या वो उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करेगा? समटाइम्स आई हैव सीन टीचर्स यूजिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज जो कि बिल्कुल आउट ऑफ टाइम यूज किए जाते हैं. Not that the teaching and learning resources are not suitable or are not age appropriate or are not relevant. They are all of this. But the point in the lesson at which teacher uses these resources is not the right point, is not the right stop for using that particular resource. So that is also something very important that requires your attention कि आप किस point पे इस resource को integrate कर रहे हैं अपने lecture के साथ. Fourthly, आपके ये जो resource आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
क्या आप इस रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं? आप क्या बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स आफ्टर यूजिंग दिस रिसोर्स लर्न सो एंड सो कॉन्सेप्ट्स, या हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट किया जा सकता है कि ये स्टूडेंट ए ने इसके साथ इस रिसोर्स के साथ काम करके ये गेन किया एंड स्टूडेंट बी ने कंपेयर टू दैट अपनी लर्निंग आउटकम्स में इस तरीके से स्ट्रेंथनिंग डेमोन्स्ट्रेट की? सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स द टीचर्स यूज अ रिसोर्स. फॉर एग्जांपल, if you give a reading material to the student, a very simple resource, right? We all use reading materials. Is there a mechanism in your mind to evaluate that all students have read that reading material? कोई बच्चा आपको आके कह दीजिए मैंने पढ़ लिया, आपके पास क्या मैकेनिज्म है इन प्लेस टू अंडरस्टैंड और टू असर्ट कि इसने वो वाकई वो रीडिंग मटेरियल पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सो समटाइम्स यू हैव टू पेयर द रिसोर्सेज with a supplementary resource just to make sure that both the resources have been used by your students. When I give a reading handout to my students, I essentially pair it with a follow-up worksheet. The purpose of that worksheet is to summarize their understanding of what they have studied in that reading handout. And this makes me judge and also comment if all my students have read through the particular reading material that I had shared with them. Lastly, आप अपने not reading materials, but the learning and teaching resources के अंदर diversity पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप एक ही तरह के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माइंडफुली अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करें, खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन की हैबिट में इंगेज हों. खुद आपको पता हो कि आप अपने बच्चों के साथ किस किस्म के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं. Okay. I'm muting my mic for a minute. Please give me a second. As to how to identify suitable resources. When you are cognizant of all of these, then you're likely to use the most suitable resource for your students, keeping in mind their context and the need of your learning outcomes. अब जब आप अपने students को, when we say that your teaching and learning resources have to be contextualized and you have to plan according to the ability level of your students. So it's very important for you to understand your students. You must know what are their learning styles and preferences. You should also know that what is their basic competence level. क्या वो, और ये हर रिसोर्स को इस्तेमाल, हर तरह के रिसोर्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको ज़रूर कंसिडर करना है कि क्या आपके स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट रीडर्स हैं, क्या वो एक रीडिंग हैंडआउट को लेके पढ़ के समझ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ क्लोजली मूव कर सकते हैं, या आप उनको मज़ीद कंफ्यूज कर देंगे. उनकी क्या रीडिंग कॉम्पिटेंस है. इसी तरीके से अगर आप कोई इंटरैक्टिव रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपके स्टूडेंट्स के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो टेक्नोलॉजी को टीचिंग अपनी लर्निंग के लिए, टीचिंग तो आप कर रहे हैं, बट क्या वो अपनी लर्निंग के लिए उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? क्या वो सेल्फ रेगुलेट कर लेंगे अपना टाइम ऑनलाइन, और would they be distracted? Would they be able to handle the digital resource on their own, or is it too complex for them? उनकी लर्निंग नीड्स क्या हैं और आपकी टीचिंग टारगेट्स क्या हैं?
ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं, दे आर वीव्ड इन टुगेदर। आप अपने टीचिंग टारगेट्स को स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। जो आपके स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, आपने उसी तरह के टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है टू प्रमोट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रेलेवेंस इन योर टीचिंग। और कितना चैलेंज लेवल है जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं और वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंड्योर कर सकते हैं। एक हेल्दी चैलेंज लेवल आपने अपने टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स को देना है। जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का एक कोर कॉन्सेप्ट है। वो कोर कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, or while making sure that students end up learning something by the use of that resource. We don't use a resource just for the sake of using it. And when you will use a resource only for the sake of using a resource, you will also realize as a teacher that you have not done justice to your learning objectives. क्योंकि आपका पर्पस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथन करना नहीं है, बल्कि उस रिसोर्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो वी हैव टू अग्री ऑन वन पॉइंट दैट resources during teaching are used only when they are relevant, when they are meaningful, when they strengthen the core concepts. And while doing this, we are able to strengthen, harness and promote students' learning to some extent. अब जब लर्निंग के साथ हम रिसोर्सेस को टाई करते हैं, तो फिर लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैटर किया जाए। अब आप हर वक्त अगर एक रीडिंग मटेरियल के थ्रू ही पढ़ाएंगे या स्टैटिक टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का वो लर्निंग स्टाइल ना हो, उनकी ये लर्निंग प्रेफरेंस ना हो। But and it does not mean that these students are not able to learn on their own. Maybe they just don't like to read and read and read and only read. So how are you bringing a variety in the use of resources in your teaching? आपके स्टूडेंट्स की जो बेसिक कॉम्पिटेंस लेवल है, वो हर टीचर को इनिशियली आफ्टर अ वीक और सो हमें पता होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट हमारी क्लास का क्या कर सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंस है, दैट इज द बेसिक कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ योर क्लास। यहाँ से आप गेज करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स का क्या लेवल है। हाँ, हर क्लास में कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट जो एक एवरेज लेवल स्टूडेंट है, वो बताता है आपको कि आपकी क्लास में जो बेसिक बेयर मिनिमम एक कॉम्पिटेंस लेवल है वो क्या है। देन आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स आर आल्सो सेट बाय यू। आप टीचर्स ही सेट कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स, क्योंकि आपका जो कोर्स है उसकी एक ट्रैजेक्टरी है, आप जो पढ़ा रहे हैं उनको उसकी एक डायरेक्शन है, और उसी डायरेक्शन में आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए एडवांस करना है। Now I have another activity for you, and I am going to very quickly share this link with Asif Saab. The link is on the screen as well. Now, my question from you is that how do you manage teaching and learning resources? क्या आपके इंस्टीट्यूशन में शेयरिंग का कल्चर है? ये सवाल है। उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को पढ़ें और जो भी मोस्ट सूटेबल रिस्पॉन्स हो आपका, उसको प्लीज पिक करें, सिलेक्ट करें और रिपोर्ट करें। Okay, so far 23 of people have responded. आपके पास जो options हैं
वो हैं कि always we work in teams. दूसरी category some, which means 2 or 3 a year. Third category is no, I don't like it. And the fourth category is I do not exist. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। ऑल राइट, ग्रेट। सो आपकी जो 4 कैटेगरीज हैं, जो मेरे सवाल में मैंने आपसे 4 कैटेगरीज आपको आंसर्स दिए, ऑप्शंस दिए, उनमें से एक कैटेगरी है कि यस ऑलवेज वी वर्क इन टीम्स। दूसरी कैटेगरी है समटाइम्स, विच मीन्स 2 से 3 दफा साल में किसी ने मांगा, आपने दे दिया। तीसरी कैटेगरी है नो, आई डोंट लाइक इट, एंड देयर आर पीपल लाइक दैट हु डू नॉट लाइक टू शेयर देयर वर्क बिकॉज दे थिंक दैट इट्स देयर एफर्ट and they should not share it with others. Fair enough, looking at it from their perspective. And then the fourth choice is no, I don't, because the culture does not exist. And this is also a fact. Sometimes the culture does not exist. आप कोई culture ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, कोई मांगता ही नहीं resources, and then you also don't want to be the first one asking for resources because you can be judged as someone who's not able to perform his or her job properly. और बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं इस प्रैक्टिस को कि आपने अपने किसी कॉलीग से लेट्स से कोर्स आउटलाइन नहीं मांगनी, आपने उनके रिसोर्सेज नहीं मांगने। सो यहाँ मैंने देखा है ये कल्चर है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, कि आप जो भी टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप शेयर नहीं करते लोगों के साथ। हाँ, बहुत अच्छी अगर आपकी कभी किसी के साथ दोस्ती हो, कोई आपके कॉलीग्स अच्छे हों, आपसे वो मांगे, आप उनको दे देते हैं। बट अगर कोई if somebody asks you for it, so there is no culture of maintaining a resource bank in your institutions. मैंने आज तक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर ये कल्चर नहीं देखा अभी तक इन द लास्ट 4 years कि एक रिसोर्स बैंक हो जहाँ पे तमाम बायोलॉजी के रिसोर्सेज पढ़े हों चैप्टर वाइज, और जो भी टीचर पढ़ा रहा है बायोलॉजी और वो उसके एक्सेस हो उस रिसोर्स बैंक की। ये डिजिटाइज्ड रिसोर्सेज हैं, चाहे किसी ने भी बनाए हैं, बट वो अपने रिसोर्स बैंक के अंदर उनको प्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के रिसोर्सेज, साइंस के रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स के रिसोर्सेज, हाँ, हर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या रिसोर्सेज बना रहे हैं, और वो अपने अपने रिसोर्सेज को खुद अपने कंप्यूटर के अंदर मैनेज करते हैं। नाउ दिस इज लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। एक इंसान ने पहिया बनाया, उसने अपने पास रख लिया, दूसरे ने बनाया, उसने भी अपने पास रख लिया। व्हाई कांट वी शेयर? दैट्स द बिग question. Now it's a pleasure to see that 17 people have answered that we always work in teams. It's wonderful because when you work in teams, that means if the team comprises of 8 people, then all 8 participants have access to the mutually created resource bank. It lessens the workload. It gives you more time to create meaningful resources which have the capacity to strengthen learning. जब आप एक थोड़े से टाइम को यूटिलाइज करते हुए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, तो you're likely to just rush through that process. You're likely to miss out on opportunities to extend students' learning outcomes. And one brain, no matter how intelligent, is never better compared to brains working in a team.
हर इंसान के पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, एक इंटेलिजेंस स्टाइल होता है, जो कि जब आप टीम्स में काम करते हैं तो आप एक दूसरे के इंटेलिजेंस से, एक दूसरे की एबिलिटीज से फ़ायदा उठा सकते हैं. So thank you so much for participating in this activity. This was very helpful for me, and this is like data collection activity as well, because it helps us to know that what is the situation, what is the on ground situation with participants, you all coming from different backgrounds, coming from different institutions, and this is also a good insight for Punjab Higher Education Commission to consider कि कहाँ पे एफर्ट की ज़रूरत है. मे बी इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ मेंटेनिंग अ रिसोर्स रेपोजिटरी. रेपोजिटरी का मतलब है कि एक रिसोर्स बैंक आपने क्रिएट कर लिया. वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो कि लो रिसोर्स्ड हैं या जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी, बहुत अच्छे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वो तमाम जगहें जो रिमोटली लोकेटेड हैं, वो इस तरह की एक सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स रेपोजिटरी से benefit कर सकती हैं. Now, moving ahead in the training, now let's see what are some of the tips for effective management. One is that you have to create a student learning outcome grid to ensure diversity. ये बहुत ज़रूरी है. आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप किस तरह के डाइवर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. Then you must work in teams to promote sharing. You should create a resource repository, try to create one at your college level, at your institution level, and then later on हम यहाँ से इस कल्चर को इतना फ़रोग़ देना चाहिए हमें कि हमारे पास एक प्रोविंशियल लेवल रिसोर्स बैंक होना चाहिए for certain degree programs and for certain age groups, जहाँ पे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के लिए अलग रिसोर्सेज हों, एबल स्टूडेंट्स के लिए अलग रिसोर्सेज हों, और टैलेंटेड एंड हाई अचीविंग स्टूडेंट्स के लिए एक अलग रिसोर्सेज हों. दिस इज़ हाउ यू कैन केटर टू डिफरेंशिएशन. दिस इज़ हाउ यू केटर टू डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स विद इन द स्टूडेंट्स. And हम सब as faculty members should work towards improving the quality of teaching and learning resources. Lastly, आपके पास यकीनन एक स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करने के लिए एक चेकलिस्ट होनी चाहिए right in the beginning of your academic year, which should tell you कि किस स्टूडेंट के पास कितनी एक्सेस है टेक्नोलॉजी की और कैसे उसकी एबिलिटी लेवल को आप एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू यूजिंग डिफरेंट रेलेवेंट रिसोर्सेज. I will show you an SLO grid to ensure diversity. This is just a sample. आप इसको contextualize कर सकते हैं, अपने मुताबिक इसको दोबारा से रीडिज़ाइन कर सकते हैं. ये इस किस्म की एक ग्रिड होती है जिसके अंदर आप इंडिविजुअल जो भी स्टूडेंट अचीव कर रहा है आउटकम, कोलैबोरेटिव अगर कोई आउटकम है उसको आप लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव अगर कोई आउटकम है तो आप उसको उसकी डिटेल लिखते हैं. टर्मिनल कॉम्पिटेंसीज क्या हैं जो आप अपने रिसोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर इंस्टिल कर रहे हैं. क्या आप उनके अंदर राइटिंग स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप इनोवेटिव स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन प्रमोट कर रहे हैं, टीम स्पिरिट को प्रमोट कर रहे हैं. ये सब चीज़ों को अगर आप ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, लाइक नोबडी आस्क्स यू कि आप इसको बहुत एलैबोरेटेड वर्जन में अपने पास इस किस्म की एक ग्रिड को रखें. अगर आप एक बिल्कुल ब्रीफ ग्रिड ऐसी प्रिपेयर करके अपने पास कंप्यूटर में एक मेक इट लाइक अ वर्किंग डॉक्यूमेंट, आप 2-3 हफ्ते आप ये इस किस्म की ग्रिड के अंदर जब अपने लर्निंग आउटकम्स को इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आफ्टर अ मंथ यू वुड हैव अ क्लियर पिक्चर कि आपकी इंक्लिनेशन किस किस्म के रिसोर्सेज की तरफ है. क्या आप सिर्फ
स्टूडेंट सेंटर्ड रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ टीचर सेंटर्ड रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स स्टैटिक एक्टिविटी के अंदर इंगेज्ड हैं, ये सब चीज़ें आपने खुद एनालाइज करनी है। बट ये एक एनालिसिस जब आपके सामने स्टेटिस्टिकली एक बिग पिक्चर बनती है तो यू आर ऑल्सो एबल टू टेल कि ये आपका रुझान एक ही तरह के रिसोर्सेज की तरफ है, और फिर आप अपने लिए खुद रास्ता बना सकते हैं कि हाउ डू यू वांट टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी थ्रू यूजिंग रिसोर्सेज। सो दिस इज वन सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए, ये ग्रिड ऐसी ज़रूर बनानी चाहिए ना। लास्टली, after I have now talked about the strategies to consider and things to consider before you plan your resources, strategies to manage resources, how can you reduce your own workloads, how can you bring variety in the teaching and learning resources, and what are some of the tips for you as individual faculty members to ensure that you're taking care of diversity and you're engaging students in relevant activities which are supported by suitable resources. After all of this, I want to hear from you. Now, this is your time to voice your thoughts, and at this point, let me announce some ground rules. You will raise your hand, I will call your name, and only then you will unmute your mic and very briefly make a comment on, and please root your comments and just focus on the use of resources, because that's what we are talking about. We are not talking about students who don't have access to the internet. We're not talking about teachers who don't have access to the internet. It's a very sad and a sorry situation, but that's a reality. We have already talked about this many a times during previous sessions, that there are some problems, some challenges which are infrastructure oriented, जिनका हम जवाब नहीं दे सकते, हम उनके लिए उनको एड्रेस नहीं कर सकते. So irrespective of our challenges, it's a good idea if we look at the purpose of this conversation, that is resources. अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या challenges होते हैं टीचर्स को in terms of resource allocation, creation, development, implementation and post implementation, किस किस्म के challenges आपको face करने को मिलते हैं. Let's talk about only resources. So please, starting from this point forward, raise your hand if you want to participate in the conversation. Mohammed